Other charting tools: Heikin-Ashi, Renko, Point and Figure. टेक्निकल एनालिसिस में अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं. इनमें से एक होता है Heikin-Ashi चार्ट. नाउ व्हाट इज Heikin-Ashi चार्ट? जापानीज लैंग्वेज में हाइकिन का मतलब होता है एवरेज और अशी का मतलब होता है पेस. Hence, the Heikin-Ashi charts represents the average pace of prices. Heikin-Ashi charts are quite similar to the normal candlestick charts. लेकिन इन चार्ट्स में कैंडल्स की वैल्यूज नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट्स से अलग होती हैं. Heikin-Ashi candlesticks use the open and close data from the previous period and the open high low close data from the current period to create a combo candlestick. Now ये टेक्निक मार्केट नॉइज को कुछ हद तक फिल्टर कर देती है और ट्रेंड डायरेक्शन को बेहतर तरीके से हाईलाइट करती है. A Heikin-Ashi chart uses a modified formula that is based on 2 period averages instead of the usual opening, high, low and closing prices like a normal candlestick chart. The current candle on a Heikin-Ashi chart is calculated using the information from the previous candle and hence there are no gaps in these charts. चलिए देखते हैं इसके formulas. Close is equal to summation of the opening, high, low and closing prices divided by 4. Now this is the average price of the current bar. Open is equal to the sum of the open of the previous bar plus the close of the previous bar divided by 2. This is the midpoint of the previous bar. High is equal to the maximum value out of the high, opening or closing prices. Low is equal to the maximum value out of the low, opening और closing prices. अगला चार्ट जो हम सीखेंगे वो है रेंको चार्ट. रेंको चार्ट is a type of trading chart that is built by using price movement rather than both price and standardized time intervals. अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है? Let me tell you. रेंको चार्ट्स एक सीरीज ऑफ ब्रिक्स के जैसे दिखते हैं. एक रेंको ब्रिक बनने के लिए ना स्टॉक प्राइस को एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक बढ़ना या कम होना पड़ता है. The trader determines the size of the brick for the chart, which then determines when the new brick will be formed. Now each brick is positioned at a 45-degree angle up or down relative to the previous brick. अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रही है तो रेंको ब्रिक्स का कलर व्हाइट या ग्रीन होता है. जब स्टॉक प्राइस गिरती है तब रेंको ब्रिक का कलर ब्लैक या रेड होता है. So Renko chart helps to easily spot the current direction in which the stock price is moving. These charts filter out small price movements and help the traders to focus on the larger trend. अगला टाइप है point and figure chart, यानी कि PNF charts. PNF charts are made up of multiple columns of X's and O's that represent a set amount of price movement. Now X columns बढ़ते हुए prices को दर्शाते हैं जबकि O columns represent falling prices. In these charts, the columns of X's is always followed by a column of O's and vice versa. Now the chart is made up of multiple boxes and each box is equal to a certain price level. If the price increases to that level, the box is filled with an X, and if the price decreases to that level, the box gets filled with an O. Now these charts evolve as the price moves, while time is not a factor in these charts. The most used PNF charting method is the 3-box reversal method. In this case, reversals and starting a new column in opposite direction requires a minimum of 3 boxes to be filled. The support and resistance levels are easily identified with the help of PNF charts. तो इस वीडियो में हमने वो अलग अलग चार्ट्स के बारे में जाना जो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन यू ऑल टेक केयर. बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.